अगर कल मुझे कोई बोलेगा कि मुझे अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है तो मैं एक्साइटेड होंगी, मैं नर्वस नहीं होंगी। मैंने सलमान खान के साथ अपना ऐड किया था ये, और वेदा भैया मेरे लिए इतने वेदा भैया बन चुके थे कि इट वाज नेवर ऋतिक रोशन। सो हम लोगों का वो रिलेशनशिप ऐसा बन गया था कि हम लोग एक दूसरे को टीज करते थे, हमने एक दूसरे को मतलब वो लोग वो जो भी करते हैं ना वो इतना ईजी करते हैं, वो बैठे भी है ना तो इतनी ईज, इट्स जस्ट so commendable that somebody is so much at ease with. It's not नवाब वाली feeling. Because नवाब easy तो रहते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है वो करने की कोशिश नहीं करते, बस हो जाता है उनसे, like because he's so much at ease with what he does. Honestly मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ या मैं पहुँच गई हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पहुँच गई हूँ और मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ। कभी भी ये सोच के नहीं किया कि ये चाहिए, बस मुझे ये पता था कि मुझे कुछ करना है। Because I've worked with him for almost 4 years and he's been that person who's taught me a lot. So he really helped me with everything. So I'm really thankful for him that he was there and he taught me all those things. So he's been a very good guide. Our industry is changing. We have so many names who have made their mark to Bollywood. Ram Kapoor, he's worked with TV actors. Sakshi Tanwar is a TV actor, a very old name, and she's doing so well. I don't think we are in that rut anymore. हेलो एंड वेलकम टू द #अनफिल्टर्ड बातचीत विद मी रोशनी। और आज हमारे साथ है योगिता बिहानी, जिनको आपने विक्रम वेदा में एक खूबसूरत सी चंदा के तौर पर देखा है और इनका जो किरदार भी रहा, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप सभी को इनके किरदार ने एक अलग सी पहचान दिलाई, एक अलग सी तरह के स्टोरी लाइन को पूरा एकदम शैटर्ड, आई वुड से रिमेम्बरेबल वैसा बात पलट दी, जिंदगी पलट दी। एग्जैक्टली। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया। थैंक यू सो मच। सो फर्स्टली योगिता, बॉलीवुड डेब्यू कर लिया है आपने, लेकिन मैं कहूँगी कि ऋतिक और सैफ के सामने अगर किसी को इस तरह से नोटिस भी कर पा रही है लोग, तो वो एक बहुत बड़ा कमेंडेबल चीज है। Thank you so much. That means a lot. Yes. So आपके किरदार ने कुछ वैसा ही किया, क्योंकि किरदार भी ऐसा ही मिला था। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि विक्रम वेदा को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? जब भी मैं मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मैं जब लोगों से मिल रही हूँ और वो जैसे मुझे देखते हैं, they want to, even if they know me or not, they would come and they would just tell me that you were absolutely amazing as Chanda, and sometimes they would talk about, and if they're from the industry, they would talk about the scene, that scene where you came back with the bag, or when you left with the bags, it was something else, and there was this honesty in your character, and you were completely because when you see me like this and you see me as Chanda, बहुत ज़्यादा difference है, आप नहीं बोल सकते कि ये मैं चंदा हूँ। तो वो जो डायलेक्ट है और जो मैंने बॉडी लैंग्वेज पे वर्क किया, इट रियली ट्रांसलेटेड थ्रू द स्क्रीन, और लोगों को लगा कि यार ये एक्चुअली चंदा है, और चंदा बहुत हद तक मेरी तरह है पर बहुत हद तक अलग है। सो वो जो कैरेक्टराइजेशन था, जो भी मैंने मेहनत किया, आई एम सो हैप्पी कि लोगों को वो पसंद आ रही है और लोगों को वो एफर्ट दिख रहा है, पर फिर भी लग रहा है कि बिकॉज लोग मुझे आके बोल रहे हैं ऐसा लग ही रहा कि आपकी पहली फिल्म है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड आई कैन गेट, कि मैंने इतनी उनको ऐसा मुझे लगता है कि मैंने ईज के साथ किया है, बट जितना हार्डवर्क आप बिहाइंड द सीन करते हो, आई गेस वो दिख जाता है लोगों को, और फिर वो आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देते हैं और आपको ज़रूर आके बताते हैं कि आपने अच्छा काम किया, जैसे आपने मुझे बताया। सो इट्स अमेजिंग। आई थिंक मुझे एक अश्योरेंस मिल गई है कि शायद मैं ये कर सकती हूँ। जी, बट आपने क्या सोचा था, क्योंकि बॉलीवुड डेब्यू को लेकर लोग काफ़ी नर्वस होते हैं, काफ़ी इस तरह से सोचते हैं कि किस तरह से होगा, प्रिपरेशन में भी काफ़ी चीज़ें होती है। यहाँ पर जब ये रोल के लिए आपको फाइनलाइज भी किया गया, किस तरह का प्रिपरेशन था? क्योंकि परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ ऋतिक एंड सैफ, वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सीनियर एक्टर्स हैं और उनका जो एक ग्राफ भी रहा है हर एक चीज़ को लेकर। कई बार जो स्टार्स होते हैं या फिर न्यूली काम करते हैं, वो बहुत ही स्टंट रह जाते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करना है। वाज दैट एनी मोमेंट? आपने इतने सारे क्वेश्चंस बोले, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं सोचा था। आई स्वेयर, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मैं अगर कल मुझे कोई बोलेगा कि मुझे अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है तो मैं एक्साइटेड होंगी, मैं नर्वस नहीं होंगी। मैंने सलमान खान के साथ अपना ऐड किया था। आई रिमेंबर एवरीबडी वाज लाइक कैसे होगा, तुझे डर लगा, तू नर्वस हो गई, तो सर इसमें क्या है, मुझे वही तो करना है जो मुझे अपना काम करना है, राइट। और ये काम करने में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं कर सकती हूँ, ये मुझे पता है।
तो I don't think I feel ever nervous about anything. मुझे अपने काम को मुझे अपने आप को लेके हो सकता है कि यार will I should be able to do it right, you know, but I think 95% of the times I'm mostly excited about everything that I want to do, or you know I will be excited. मुझे जब पता लगा कि मुझे ऋतिक रोशन के साथ काम करना, मैं excited थी, I was not nervous. वो नहीं होता है मेरे साथ जी. बट हैविंग सेड दैट कि क्योंकि ऋतिक और सैफ एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनकी इतनी अच्छी फीमेल फॉलोइंग रही है एंड पीपल हैव स्टिल क्रश ऑन देम, बी इट ऋतिक उनके मूव्स के लिए और जिस तरह का लुक भी उनको दिया है और जो गाने भी है गर्मी बढ़ा देती है. सो आपका जो ये एक्सपीरियंस रहा, हाउ वाज, लाइक शेयर सम बीटीएस विद अस. So you know, मुझे सब लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, but you know when I went to the set I would always feel like Chanda and would always be my Vedha bhaiya and somebody who I would do masti with, and I've been with him since childhood, because honestly for Chanda the most important thing was to live the character more than the film, because you go and you pick up some flashes from her life. बट वो फ्लैशेस इतने इंपॉर्टेंट है, वो इतना रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी कैरेक्टर को, हर सीन इतना इम्पॉर्टेंट है. तो मैंने इंटरनली इतनी ज़्यादा लाइफ जी ली थी चंदा की, और वेदा भैया मेरे लिए इतने वेदा भैया बन चुके थे कि इट वॉज नेवर ऋतिक रोशन. सो हम लोगों का वो रिलेशनशिप ऐसा बन गया था कि हम लोग एक दूसरे को टीज करते थे, हमने एक दूसरे को एंड ऑल्सो ही वॉज सो नाइस, ही वुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ अस. I remember 3 days से मैंने खाना नहीं खाया था because हम लोग out of country थे and there was no good food as such, because you after a point of time you need home cooked dal, चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल, curd rice, or that basic sabzi and roti, and it was थोड़ा सा difficult and especially we were shooting during COVID time, so it was very difficult. And when HR got to know about it and he was like, oh God, what are you saying? Let me so he called his chef and asked कि please send her curd rice. So 3 days के लगातार जब तक हमारा शूट था, he would send curd rice for me through his chef, and every day it will come with two spoons, and Rohit and I will sit and he's like, hey, and Abu Dhabi में कड़ी पत्ता भी उनके पास था, तो he would get it seasoned. Like the chef was also very sweet, but he would take care of us as Chanda and Shatak also, and he was very nice, always said, because he knew that we felt like वो senior or junior, he's our senior and we're juniors, and we just we had that energy, but he understood that and he made us feel so comfortable on set. It was amazing. And how was your experience with Saif? क्योंकि we know how Nawab is. हम लोग ने वैसी stories भी सुनी है कि वे set पे बहुत मस्ती करते हैं. He is very chilled as well. So that is sure that he is a very very chilled out person. I did not get to share as much space as I had with HR. So but one day we were shooting and I saw him and I realized that this person has so much ease. मतलब वो जो भी करते हैं ना वो इतना easy करते हैं, वो बैठे भी है ना तो इतनी ease. It's just so commendable that somebody is so much at ease with. It's not Nawab wali feeling. Because Nawab easy तो रहते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? Like they're like if he's sitting, everything is happening. He's very chilled out. So I think because he's a Nawab. But how helpful he has been? HR or Saif. Saif, I had, because I did not share as much screen with him, so I could not. But I think the body language that he has, even when I saw him performing, I realized that something which is very beautiful about him is that he does everything with so much ease. The smile, the character. You would not say that he's trying to put any effort or he's really worked so much. Though you can see his as Vikram, but you cannot say that यहाँ पे पता लग रहा है कि इन्होंने कुछ effort डाला है, कुछ करने की कोशिश की है, because वो करने की कोशिश नहीं करते, बस हो जाता है उनसे. Like because he's so much at ease with what he does. So that is one thing that I've definitely gotten from him. Lovely. Apart from this, one thing that I wanted to know, और इस पे काफी debate भी चल रही थी social media पर कि who performed better, be it Vikram or Vedha. So what do you think? I cannot choose. I think at some places you would be blown by HR's performance की मतलब क्या ही कर दिया. मतलब I remember the entry shot of Hrithik Roshan. He enters and then the way he puts glasses and
there are so many scenes, you know, where his eyes just spoke so much about his character. तो वहाँ पे मुझे लगा कि यार कितना अमेजिंग कर रहे हैं. कुछ सीन्स ऐसे होते थे जब मैं सैफ को देखती थी, बोलती थी यार ये कितना अमेजिंग कर रहे हैं. मतलब with some scenes that he had with Radhika, and the way he went out in his bullet and the confidence that he had, he had a very different mannerisms जहाँ पे उन्होंने एकदम ease से चीजें की है. और जब वो गन से एनकाउंटर कर रहे थे, बिकॉज वेदा तो है ही गुंडा, पर एक कॉप में भी वो हीरोइज्म जो उन्होंने लेके आया, बट नॉट गुंडे वाला, बट एक कॉप वाला, वो भी बहुत कमेंडेबल जॉब है, राइट? सो आई थिंक वो सब बहुत ब्यूटीफुल था दोनों के बारे में. आई कांट चूज. Yes, but Yogita, we'd just like to know, क्योंकि you started with TV and then वहाँ से काम करने के बाद आपने यहाँ पर अभी बॉलीवुड डेब्यू किया. How was this entire journey of yours? It's been wonderful. It's been exciting. Honestly, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ या मैं पहुँच गई हूँ. मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पहुँच गई हूँ और मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ. सो आई थिंक ब्यूटीफुल जर्नी रही है, एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स गोना हैपन नाउ. सो ये ब्यूटीफुल जर्नी को एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल बनाते हुए बस चलते जा रहे हैं. आप हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी? यार मुझे पता नहीं था कि मैं एक्टर बन सकती हूँ. That is what I would say, because I come from a background which is Marwadi Orthodox family. My father is a businessman, my mother is a housewife. My father wanted and actually made me do computer science because you'll become an engineer, you'll have a nice desk job. That's what he said. But I was never somebody who could fit into a shell. So I had my own reasons and things, and I think it was my calling, and I could come to Bombay because I was working, and I accidentally went into an audition room and they selected me for an ad, and that was the first time I could do it. So it was, I think, destiny calling me for my dream, and then I worked hard for it. उसके बाद जब आपको एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड आई वुड से कि अपॉर्चुनिटी मिली, अब वो किस तरह से मिली एंड वो आपने किस तरह से परस्यू किया उसको? Are you talking about the show? Yeah. So when I got that show, I was really happy because within the 6 months of me, I would not say within the 6 months, because a lot of people tell me that within 6 months you got that. Wow, you're very lucky. But I know that when I started acting, because when I own to something, जब मुझे कुछ करना होता है ना, तो मैं वो करके रहती हूँ, and उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता. I think this is a similarity between Chanda and you. Yes, exactly. So मैं सुबह उठती थी, I would pack a bag of 4 or 5 different kinds of clothes, like a suit, a formal look, a pant and a shirt, shorts and a t-shirt and a denim and a cute dress, because these were the 4 or 5 kind of things that you would, as a dress code, you would be required in a studio if you are auditioning for a ad. So ये वो कुछ, because आप जाते कुछ कोई नहीं जानता है, राइट? आपको जाना पड़ेगा, आप उनको पूछना पड़ेगा कि आर यू टेस्टिंग फॉर समथिंग. सो वो 6 महीने मैंने रेगुलरली वो किया है. मैंने रेगुलरली इतने ऑडिशंस दिए हैं जिसकी वजह से लोगों ने मेरा ऑडिशन देखा, किसी ने मेरा ऐड देखा, किसी ने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया, किसी ने मेरा प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड किया. मैंने नंबर्स लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स के. एक दिन मैंने 108 कॉन्टैक्ट्स किसी से प्रोक्योर किए थे टू सेंड माई प्रोफाइल टू पीपल. सो पता भी नहीं था कि प्रोफेशनल पिक्चर्स क्लिक करानी होती है, पोर्टफोलियो करवाना होता है, ये सब नहीं पता था. बट जो भी पता था मैं बस वो करे जा रही थी. सो बट ये कभी भी ये सोच के नहीं किया कि ये चाहिए, बस मुझे ये पता था कि मुझे कुछ करना है. सो जब वहाँ से जब मुझे पहली बार वो टीवी शो मिला, आई वॉज रियली हैप्पी, बिकॉज मेरी फैमिली के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था ये चीज़ें एक्सेप्ट करना, बिकॉज मैंने ऑनेस्टली अपने आपको 3 महीने का या 4 महीने का टाइम दिया था. ये 3 महीने में मुझे एड्स मिल रहे थे, उसके नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे जब टीवी शो मिल गया, आई सेड ओके, मे बी आई टुक द राइट डिसीजन ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, लीविंग माई जॉब. एंड माई फैमिली वॉज ऑल्सो लाइक, ठीक है, अगर आप तुम्हारा नहीं वर्कआउट कर रहा है, बिकॉज फॉर देम इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी मी डूइंग समथिंग बिग. आप सिर्फ एड्स करके नहीं जिंदगी निकाल सकते, आप सिर्फ एड्स करके एक्टर नहीं बन सकते. दैट इज जस्ट नॉट इट. मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा. तो जब मुझे वो पहला टीवी शो मिला और जब मुझे लगा कि मैं टीवी पे आ जाऊंगी, तो वो छोटी सी बच्ची थी ना जो कभी सोचती थी कि मैं टीवी पे आऊंगी, उसका सपना पूरा हुआ, तो बहुत अच्छा लगा. जी. देन करण के साथ आपका शो काफ़ी अच्छा चला.
और उसको भी काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली आपकी और करण की जोड़ी को भी. हाउ डू यू सी दैट बॉन्ड? एंड इनफैक्ट करण इज डूइंग वेल इवन नाउ. Yes. How do you see that? I'm very, very happy for him, honestly, because I've worked with him for almost 4 years, and he's been that person who's taught me a lot. I remember when the first day I was shooting a scene with him, I didn't know what to say because, I had seen him as Karan, and of course, I'm 11 years younger to him. So, मेरा पहला सीन ये था कि जिसमें मुझे बहुत डांटना था, उनको बहुत कुछ सुनाना था उस शो में, and मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, because I was still a kid, I was 19-20-year-old, and मुझे नहीं पता था कि कैसे चीज़ें होती है. So he's really helped me with everything because मुझे टीवी में कुछ आइडिया नहीं था. 12 घंटे की शिफ्ट होती है, एक्स्ट्रा आवर्स होता है, 9 AM कॉल टाइम होता है, तो 12 घंटे में पैकअप होता है. अगर मैं 4 दिन से सेट पे काम करूँ तो मुझे नहीं पता था. So he really helped me with everything. So I'm really, really thankful for him that he was there and he taught me all those things. So he's been a very, very good guide and guidance and a very good friend to me. हमने देखा है कि क्योंकि उन्होंने काफी सारे रियलिटी शोज भी किए हैं और लोगों को गाइड भी किया है, तो उनके अंदर वो ऑरा है कि किसी को एम्पावर करने का. और अभी भी सो उस वे में अगर आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहिए कि मेमोरी और अ थिंग दैट यू नो दैट ऑलवेज विल स्टे विद यू. I think that the whole journey of 4 years where we have like almost 3 years, 2.5 years we shot everything that we've shot. I think we have had so much fun. Every day we would go to the set and we would come back together. We would eat together. Everything was beautiful. We had so much. The whole cast, all of us in Delhi together were very close to each other. We would come to have picnic on the set, honestly. So we had so much fun. Like I would never forget that experience of my life. I've learned a lot and I've had so much fun on that show. Lovely. So Yogita, I would just like to know, kyunki I would say that touch wood, it's a long way for you to go now. Yeah. It's just a debut and just a start. What is something that is already in your bucket list? I have finished shooting for a film right now, and next year I start shooting for another film, and I am really excited to see, the other film has already been shot, so by next year it should come. So I'm really excited to see how people will like me in that because it's a totally different character and I've picked up Malayalam accent for it. It was fun. It's been a ride for that film. And it's going to really touch people. It's going to really, it's a really important subject of our country that we have tried to capture, and I'm very excited about it. Lovely. But योगिता एक चीज़ बताइए, क्योंकि हमने देखा कई बार जब टीवी से निकल के कोई भी आर्टिस्ट बॉलीवुड की तरफ मुड़ता है, काफ़ी बार टैग किया जाता है या फिर साइडलाइन किया जाता है. आपके साथ कभी ऐसा हुआ? Yeah, honestly, I think in life you can complain also and you can be thankful to it also. So I am very thankful to it. Because whatever I've learned and whatever I can do is because of that. मुझे उन्होंने इतना बड़ा platform दिया where I could learn and I could reach so many places. I'm very thankful to it. And I think our industry is changing. We have so many names who have made their mark to Bollywood. Because, you know what? They were good actors. If we talk about anybody who's made it from TV, they're all doing well because they are good actors. So I know there are some habits that you pick up from TV because you're shooting an entire episode in a day and then you're shooting like a 2-minute footage on a film. There's a difference. Yeah. So sometimes you pick up the most bad habits because you start doing easy acting and you start, because the screens it's different. The 70mm screen and there's like a 15 screen. It's different, right? Yeah. How can you compare it? So you have to act differently on a TV and on the screen. If you can make that transition and if the director feels like, you know what, even if there was a TV actor, but he can do what I want him to do or her to do on the 70mm screen, I think he'll give you the opportunity. Because I started with AK versus AK for Netflix, and Vikram sir is a director who's worked with Rohan, Ram Kapoor. He's worked with TV actors. Sakshi Tanwa is a TV actor, a very old name, and she's doing so well. I don't think we are in that rut anymore. It is your passion, it is your... See, it's not just about TV. Even if I was a fresher, I would have still needed to work harder than anybody else or like everyone else.
to reach where I am today. So let's count our blessings. Lovely. Okay, lastly, we'll just like to know कि Yogita, how was your feeling of watching yourself on TV and then on 17? मैं तो डांस कर रही थी यार, honestly मैंने पूरा टाइम सिर्फ डांस किया है. And the moment that Yogita Bihani came, I told my parents, Mama, मेरा नाम, Papa, मेरा नाम. I was actually behaving like a kid on the whole premiere, and because that was my moment, and I wanted to live it, and I was happy, and I'm still very happy. I still watched the film last night. I'm absolutely. Tell me a count कितनी बार देखा है? I think by the end of it, I'll at least watch it like 10 times because I have to watch it with so many people. And I can watch it. Of course. It's not just about me because the film is great, yeah. The film is good. Every time I'm watching it, I'm finding different. अच्छा ये ऐसा इसलिए किया है. Oh, that loophole I'm understanding. So when you watch the film again and again, you find new things. Yes. It's always a learning. Watching films, you learn so much. Short take, like last night I was interested in short takings. I was like, अच्छा ये कितना प्यारा लिया, जैसे sun reflect हो रहा है. Oh wow! So I was interested in that. So every time you watch a film, you learn something else. And अपनी film से learn करना चाहिए यार. बिल्कुल. Thank you so much, Yogita. Thank you so much. HR and Saif. मुझे वो सब shows बड़े, सारा भाई versus सारा भाई, खिचड़ी, all these shows I really used to like. अनजान शहर में, अनजान देश में मुझे curd rice खिलाया उन्होंने. चंदा मेरी चंदा तुझे कैसे मैं ही समझाऊं. We are so much into Chanda for now. We have Chanda fever. कितनी प्यारी रे. We have HR in that as well.